सम्मेलन लिया है, यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करिए और आपकी पार्टी के बारे में ज़रा बताइए और क्या कुछ मोटो है, क्या कुछ चीज़ें लेकर आप लोग आगे बढ़े सब प्लीज़ आप सबसे पहले आपसे सेट करें। हमारे राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी आज जो शुरुआत किए हैं, तो हमने हमारे राष्ट्रीय प्रमुख साहब हनुमान जी धावने जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली मैडम जी है और मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बाबू रंगरेज, हमने मिलके हमारे जो टीम ने मिलके आज शुभारंभ किया है और श्री गणेश किया है हमारी पार्टी के साथ। और पार्टी का मुद्दा एक ही है कि बेरोजगार के खिलाफ रोजगार के लिए हमारी पार्टी लड़ेगी और लोगों को जो अन्याय नहीं मिल रहा है हो रहा है उसके साथ न्याय दिलाने के लिए हमारी महाराष्ट्र स्वराज भूमि पार्टी हमारे आगे सभी लोगों को साथ देंगे। और जितनी भी पार्टी के लोग हमारे आए हुए हैं वो हर लोगों के साथ में जुड़ के हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए आने वाले कुछ दिनों में आगे बढ़ेगी। और पदाधिकारियों को पूरा महाराष्ट्र के अंदर उनको पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और उनको विधानसभा का टिकट देंगे और उनको जिताने की कोशिश करेंगे। और जो भी बहुत गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट से उनकी सुविधा बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है, सरकारी नौकरियां खाली है, उनको नहीं दिए जाते, तो हमारी महास्वराज भूमि पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ जुड़ के उनको न्याय दिलाएंगे और उनका हक है उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख साहब हनुमान जी धावने जी कुछ सब बोलेंगे। जय हिंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी क्या किस नई मोड़ से जा रही, क्योंकि सुनने में पार्टी के सब कुछ गड़बड़ चीज़ें भी हुई थी, लेकिन अब आप लोग एक नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। आप प्लीज़ आपके विचार बताइए और क्या कुछ बोलने क्या प्लानिंग है आपको। राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पार्टी याच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले होते, तर आम्ही नवीन कार्यकारिणी डिक्लेअर केलेली आहे आणि हे पदाधिकारी सर्व राज्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी पदाधिकारी देऊन नव्या जोमानं पक्षाचं काम करतील आणि अन्याय अत्याचार विरोधात जिथं जिथं अन्याय होतोय तिथं आमची राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पार्टी काम करेल। आप सर क्या कुछ राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पक्षाची स्थापना साधारण 2 ते 3 वर्षापासून झालेली आहे। राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पक्षाचा एकच उद्देश आपल्या देशाची एकता अखंडता कायम अबाधित राहावे, लोकांमध्ये बंधुभाव निर्माण व्हावा, प्रत्येक लोकांना म्हणजे सामान्यातल्या सामान्य गोरगरिबांना रोजगार मिळावा, त्याला 2 वेळचं चांगलं जेवण, चांगल्या आरोग्य सुविधा व्हाव्या, प्रत्येक गावात मुलांना खेळायला क्रीडांगण, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कसं प्रत्येक गावात लायब्ररी, तसं प्रत्येक गावात शिक्षण, चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा या मिळण्यासाठी आपण राजकीय पक्षाची माझी संकल्पना होती। त्या संकल्पनेला आमचे मित्र हनुमान धावणे सर आणि आमचे एक सहकारी त्यांनी दोघांनी मिळून अहोरात्र मेहनत घेऊन ही पक्ष पुढे दिला। आता त्यामध्ये काही इगो काही क्लॅशेस आणि एका सडक्या कांद्यामुळे पार्टीमध्ये काही वितुष्ट आलं होतं, त्यासाठीच ही बैठक बोलवण्यात आली आणि त्यांना त्या कार्यकर्त्याला पक्षातून बडतर्फ करण्यात आलेलं आहे, सर्वानुमते बडतर्फ करण्यात आलं आहे। पक्षात काही उमेदवार अनुपस्थित होते कारण पक्ष हा भारतातील बरेच उमेदवार असल्यामुळे तर त्यांनी फोनवरून पक्षासोबत असल्याबद्दल कळवण्यात आलेलं आहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली गोसावी यांनी यापूर्वी त्यांच्याबद्दल त्या पार्टीमध्ये सक्रिय नसल्याबद्दल बोलले जायचं, परंतु त्यांची वैशाली गोसावी माझी पत्नी त्यांनी देखील विधानसभा इलेक्शनसाठी स्वतः मनापासून
मेहनत घेण्याची तयारी घेतली आहे. बाबूभाई, रंगरेज, पूजा मॅडम, शिवाजी वगैरे सर्व मिळून एकोप्याने पक्षासाठी काम करण्याची शपथ घेतलेली आहे. आणि यानंतर येणाऱ्या काळात विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिका वगैरे प्रत्येक इलेक्शनमध्ये राष्ट्रीय महास्वराज पार्टीचे चांगले उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. लोकांपर्यंत जाणं, लोकांच्या छोट्यातल्या छोट्या समस्या जाणून घेणं आणि त्याच्यावरती प्रभावी नियंत्रण कसं करायचं, त्या अधिकाऱ्यांना मिळून एकत्र राहून आणि आनंदाने एकोप्याने कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे आंदोलन किंवा चुकीच्या गोष्टी न करता एकोप्याने, कारण आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या पक्षाचं एकच उद्दिष्ट आहे का देशाच्या एकात्मतेला कोणत्याही प्रकारचे लागले पाहिजे. जाती प्रथा, यापूर्वी जाती भेद हे ते नाही. माझ्या पक्षामध्ये सर्व हिंदू मुस्लिम सगळे एकत्र आणि ते पूर्ण भारतीय असल्याप्रमाणे राहतील, आनंदाने राहतील, हे आपल्या पक्षाचं ब्रीदवाक्य आहे. मी पक्षाचा सदस्य नाही, पण पक्षाचा माझी पत्नी असल्यामुळं मी मार्गदर्शक म्हणून आहे. फक्त जेव्हा जेव्हा आपण बोलवाल त्यावेळेस मी नक्कीच हजर राहील. धन्यवाद. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पति के जो मत है उससे कितनी आप एग्री कर रहे हैं? आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोला ना. राजकीय सर्वांना माझ्यातर्फे मनपूर्वक शुभेच्छा. सर्वांना माझ्यापासून मनापासून मनपूर्वक शुभेच्छा. आप सामने देखिए और नहीं चलेगा. मला भीती वाटते. ओके, हल्का सा बोलिए लेकिन सामने देखिए. वो तिला माहितीच नव्हतं. ठीक आहे. और किस तरह से आप जुड़े हैं? ये सर हम लोग के ना राष्ट्रीय महास्वराज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे तक लेके जाएंगे और सबको साथ देंगे. ये हमारी शुभकामना रहेगी सबके साथ. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोला ना. हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी, ये पार्टी बस गरीबों के लिए है, गरीबों के हक लिए और अन्याय के लड़ने के लिए है. तो हम सब मिलकर, ये तो अभी शुरुआत है, जो भी हुआ पास्ट में जब ये पार्टी स्टार्ट हुई थी तो हर पार्टी में कुछ अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं. तो हम नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिविटी के साथ हम सब मिलकर एक साथ आज संकल्प लेते हैं, सब मिलकर बहुत अच्छे से और बहुत ही मजबूती से काम करेंगे. आने वाले इलेक्शंस में हमारे वो रिजल्ट्स बहुत ही 101% दिखेंगे. थैंक यू सो मच. आखिर में सर आप अपने